स्वागत है आपका टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू हाउ आर यू डूइंग? सर। डूइंग ग्रेट राइट नाउ, ठीक ही है। हैप्पी अबाउट दिस इंटरव्यू कॉल? यस सर, इंटरव्यू यस सर, एक्साइटेड एंड एंग्सियस, यस नर्वसनेस? सर। थोड़े से एक्साइटेड है, नॉट नर्वस बट यस अ लिटिल एक्साइटेड। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपका इंटरव्यू कॉल आया है थैंक यू सर। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएँ और आपका सिलेक्शन। थैंक यू सर। आर यू ऑल सेट फॉर दिस मॉक इंटरव्यू? यस सर, लेट्स बिगिन। यस सर। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, I have done my graduation in Applied Electronics and Instrumentation Engineering from the University of Bardhaman. My optional subject is sociology, and my hobby is gymming, fitness, and workout. Okay. Why did you uh, take this field of civil service? क्यों आप आना चाहती हैं एज ए सिविल सर्वेंट? Sir, I have taken this option of civil services because ever since my graduation, I realized that this is the platform जो कि मुझे public interaction की ओर बहुत ज़्यादा push करता है, और also for the reason that it allows me a diversified job role, which if I was there in a regular 9 to 5 engineering job, it was not possible. My capabilities would have been restricted, but here I can put my best. That's what I think, sir. आपकी हॉबी क्या है? Sir, my hobby includes gymming and fitness. How does that help you? Sir, when I gym, when I go to the gym or when I do regular fitness workout, तो इससे मेरी body जो है वो fit रहती है. I feel healthy. My body is healthy, and I also feel mentally balanced. So this helps me in that way, in keeping myself mentally aligned and physically fit. Proteins and supplements which is available in the market. If we take normal proteins, so yes, to some extent it is good. It helps in muscle recovery, muscle building. But taking unnecessary supplements and steroids, that is very detrimental to the health. It puts a negative effect on the health, as in the changes that the body takes in after taking the powders. It is sort of temporary, and also since the good results are temporary, it has a lot of side effects on the health in the long run. ओके। विच जिम में आप एक्सरसाइज करती हैं, किस में करती हैं, कौन से जिम में? सर, there's a gym nearby, मेरे घर के ही नजदीक है सर, वहीं पर। ओके। अच्छा, प्लीज टेल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन बिहार 3 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो आप देख रही हैं, यू foresee which you may have to handle in near future. Yes, sir. So the very first problem which I see is a very big problem is the education and the literacy level in Bihar, which has to be improved. As we know, the literacy level is the lowest in Bihar as of now. The second problem would be the status of women in Bihar. If we see the female dropout rate, that is also very high in Bihar, and if we see the participation of women in public administration or politics, that is also very low. So this would be the second problem. And third would be, sir, unemployment, due to which migration is a very big issue in Bihar. People have to migrate outside for work. Don't you see that a political party which has been in power over the last 18 years, the government has been in power, and yet 3 specific problems which you have spelled about have not been eliminated? Don't you think that this is a failure on the part of the government? Sir, given the population of Bihar, which is the third largest populous state of the country, the resources, sir, that we have is limited, but the human requirements, they are very large. But all we can do is strive for the maximum benefit. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को benefits मिले, welfare पहुंचे, ये हमारी सरकार की जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है. We cannot totally say that the population, none of us, any part of the population has not been taken care of, या किसी का भला नहीं हुआ है. We cannot say that, but yes, there is a lot of things that can be done since the population is very high. So there is a scope for further improvement also. Okay. So don't you think that if we talk about the population being very high, if you see other states like Maharashtra and UP, their population is also very high, but you see on several indicators of development, they are far ahead of Bihar. Yes, sir, that is true. That big states like Maharashtra and Uttar Pradesh, they are performing better than Bihar in several parameters. But also, sir, we cannot
ignore the fact that Bihar has several other challenges which states like Maharashtra and Uttar Pradesh, which they are not having. For example, Maharashtra and Uttar Pradesh, they are doing well in terms of industrial development. They have industries. Maharashtra is itself an economic capital, so the state has overall better opportunities to provide economy for economic growth. Whereas if we see these things in Bihar, it is not like that. We are still an agricultural state. हमारी जो GDP है वो ज्यादा एग्रीकल्चर पर अभी भी निर्भर करती है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतनी नहीं है, तो वी कैन वर्क ऑन दिस एंड देन वी कैन कम एट पार विद स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. Are you aware about the size of GDP of Bihar at present? Sir, I'm not very sure, but if you allow, I would like to try. Yeah, please go ahead. Sir, as far as I can see, the growth rate of Bihar is the highest in India. And also the size of the GDP in terms of amount, if I say, it is more than 6 lakh crore or something. But I'm not very sure of the figure, sir. But I'll read on this. Okay. Are you aware that the government of Bihar, it presented economic survey in which year? First time? Sir, I'm not sure of this, but I'll read on this. Okay. You must be aware that Bihar faces recurrent flood and drought. Yes, sir. Don't you think that the government should do something concrete so that these problems can be addressed in a scientific way? I'm sorry, sir. The question missed. Audio missed. I was asking that floods and drought. Yes, sir. These are the troubles which Bihar has been facing over the last several years. Yes, sir. But क्या आपको लगता है कि सरकार को ऐसा क्या 3 कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाने चाहिए इनको एड्रेस करने के लिए? Yes, sir. Sir, problems like flood and drought is a permanent issue for the landscape like Bihar, which has so many rivers in North Bihar, and the South Bihar, which has a majority part in Chota Nagpur Plateau. So there will be drought and flood, but it can be challenged. It can be tackled very efficiently. For example, for flood, there can be preparatory measures taken before flood, relief measures to be taken after flood. For places in South Bihar जहाँ drought की समस्या बहुत ज़्यादा है, climate resilient agriculture can be practiced. Crops can be grown which are tolerant for the changes in climate. And also, sir, there are many schemes like the Ganga Jal Apurti Yojana, etc., which is aiming to deliver water to the drought affected areas of South Bihar. And there are also committees being formed to negotiate the flood which is caused by rivers like Kosi. The RK Jain recent committee, the RK Jain committee, which is formed to look forward what can be done to tackle flood in rivers like Kosi in North Bihar, sir. Okay. Do tell about the districts of Bihar which adjoin UP. Sir, starting from the north, it is West Champaran, Gopalganj, then Saran, Siwan, Buxar, Bhojpur, Kaimur, and parts of Rohtas. Very good. And with Jharkhand? So there are again 8 districts touching the border of Jharkhand. From west to east, they can be Kaimur, Rohtas, Aurangabad, Gaya, Nawada, Jamui, Buxar, and Banka. No, not Buxar, sir. Banka, and one more I'm missing, sir. I'm sorry. अंतिम प्रश्न हमारी तरफ से, जी सर. आपके पर्सनालिटी के कोई 3 वीकनेसेस हमें बता दीजिए. Sir, in my opinion, the first weakness would be I am a little introvert. I take a lot of time to open up and make friends, but I'm working on it definitely. Second weakness would be I take a lot of time to do a work because I believe in precision. So I believe in detailing. So unless the work is not done in detail, I'm not satisfied. So इसके कारण कभी-कभी time constraints भी हो जाते हैं. And third, sorry sir. And third would be, sir, I would say, sir, I'm not able to recall the third weakness. I'm sorry, but there has to be a weakness, I'm sure. Very good. Thank you. Thank you, sir. Over to Bhavna ma'am. Prerna Singh ji. Ji ma'am. You work out. Your hobby is workout, right? And then there's something called as yoga. Yes, ma'am. Which one, according to you, is more effective? Sir, ma'am, as of in this case, I cannot actually say that yoga is better or gymming is better.
but the overall priority should be fitness. Human body should be active. We should be able to perform our work better, do our work better. Health should be the priority, and I think health can be well maintained by yoga as well as gymming in both the cases, ma'am. Okay. Okay. Are you aware that when you run, which muscles of your body are involved? Um, no, I'm not very sure of this. I'm sorry. Okay. Okay. Tell us that what is the difference between electronics and electrical? Ma'am, I'm not very sure, but if you allow, I would like to try. Yeah, please. Ma'am, electronics includes all the components, chips, semiconductors also. Electrical is basically all the wires and networks. So it has to include, there is a wire and there is electrical current flowing through it, coming from one source to another. And in electronics, it also includes semiconductors and solar cells, where light can also be converted into electricity or electrical forms. So in my opinion, this is the thing, but I'll read on this. Okay. What is a diode? Um, Ma'am, diode is a. I'm very sorry. I'm not able to recall, ma'am. But I'll read on this. Okay. What is the extrinsic semiconductor and what are its types? I'm not sure, ma'am. I'll read on this. Okay, no issues. What is Sat Nishchay 2 part of Government of Bihar and what are its components? Also tell us the various schemes that are connected to each heading. Ma'am, Sat Nishchay Yojana is basically a flagship scheme of the government of Bihar, which is basically for rural development, youth empowerment, women empowerment, overall development of Bihar. The various components of Sat Nishchay 2 are like uh, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, स्वच्छ Are you गांव sure about the first component? मैम Are you sure about the first component? मैम इट इज फॉर women empowerment, but I'm not sure of the name that I have taken. Okay, tell us the scheme. It is for the CM Mahila Udyami Yojana. It is the first one, which is for women empowerment. The second is youth empowerment, which is Yuva Shakti Bihar ki Pragati. Then Swachh Gaon Samriddh Gaon, Swachh Shehar Vikasit Shehar, Har Ghar Pakki. I'm not sure of the scheme, but it is for water availability in all the parts of Bihar, and सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं. This is I can recall, ma'am. ओके, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं. महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या कर रही है? कौन सी योजना लेकर आई है? मैम, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बिहार सरकार द्वारा कुछ स्कीम्स है, जैसे कि देयर इज एन ऐप कॉल्ड वंडर ऐप, जिससे जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनके स्वास्थ्य की जो है उस पर निरंतर नजर रखी जाती है, और उनको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का भी ये सारा जिम्मेदारी उनके पास है. एंड देयर इज ऑल्सो जीविका की मदद से भी जो है औरतों की जो खास करके ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी मदद की जाती है, उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक पहुंचाने में या ऐसे. और मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल मैम, बट आई रीड ऑन दिस. Okay, tell us that how will you ensure the economic empowerment of women as an administrator? मैम, द फर्स्ट थिंग इज फीमेल लिटरेसी, विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी नो कि बिहार की जो लिटरेसी फीमेल लिटरेसी रेट है वो इंडिया में सबसे लोएस्ट है. तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स women empowerment should be ensuring good rise in the percentage of female literacy. After that, there are schemes which the government of Bihar has introduced for women empowerment. उन schemes का proper implementation होना चाहिए, ताकि women also take part in startups and entrepreneurship and business activities. And third would be self-help groups, encouraging more and more self-help groups, ताकि महिलाएं जो है वो सक्षम हो सके और अपने लिए भी रोजगार के अवसर तलाश सके. In brief, tell us the history of Patna. Movement is very important, and it starts right from the revolt of 1857. As we know, the role of Babu Kunwar Singh, 1857, his role was like very important. From thereafter, the second most important thing was the Champaran movement. It was in 1917. It was the first movement from where Mahatma Gandhi actually started his political career in Bihar. The entire freedom struggle against the Britishers by Mahatma Gandhi started from Champaran, which is in Bihar itself. Thereafter, the non-cooperation and the civil disobedience movement was the time when we can see public participation also in Bihar.
and then Quit India movement also, where people like where fighters like Jai Prakash Narayan, Ram Manohar Lohia started Azad Dasta, revolutionary form of government, and this is what I can recall, ma'am, right now. Okay. Who do you consider as your role model from history, Ma'am, I would say Mahatma Gandhi. and He's why? the role model. Ma'am, because he has given the ultimate slogan of non-violence and peace. He has proved how, without taking up arms, we can fight against a whole weaponized form of government, the Britishers. Without taking up arms, it is not necessary always to fight and go for violence. So this is the best example that I can So give if he about. was so non-violent, then why did he give the slogan of "Do or Die"? Ma'am, he gave the slogan "Do or Die" because during Quit India movement, Mahatma Gandhi said that we will either free India from the slavery or die in the attempt. It doesn't necessarily mean that he was provoking people to take up arms. He said that this is the last time that we can finally fight the foreign domination, because he said that we will not remain alive to see India as a slave again. So this was the slogan of "Do and Die," do or Thank die. you, Prerna Singh ji. Over Thank to you. Pooja ma'am. Thank you, ma'am. ये प्रेरणा सिंह जी, जी मैम। आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है। जी मैम। ओके, महात्मा गांधी एक समाजशास्त्री थे या समाज सुधारक थे? मैं आई वुड से बोथ। समाज शास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज को बहुत सारे नई थ्योरीज भी दी, जिसको अभी हम लोग गांधीयन आइडियोलॉजी कहते हैं। गांधी जी की जो विचारधाराएं हैं, वो खुद में एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी की तरह पढ़ी जाती हैं, जैसे कि सत्य, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। ये अपने आप में एक पूरी आइडियोलॉजी है, तो एक तरीके से समाज शास्त्र ही हुआ। दूसरा, हम उन्हें समाज सुधारक इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने भारत को बहुत सारे रूढ़िवादी विचारधाराओं से आजाद किया, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो समस्या थी, जो कम्युनल अवार्ड के वक्त हुआ, तो गांधी जी ने हरिजन का नारा दिया। उस वक्त उन्होंने बताया कि जो दलित समाज के लोग हैं, वो हमारे सोसाइटी के ही लोग हैं, और छुआछूत जैसी जो समस्या है उसको खत्म करना होगा। और हरिजन, उनको नाम दिया गया अलग से कि वो भगवान के ज्यादा प्रिय है। तो ये सोशल रिफॉर्म है एक तरीके से। ओके, हरिजन नाम इसलिए प्रेफरेंस के लिए डाला। दूसरा ये है कि मुझे शुरू से ही बहुत ही चार्म था टुवर्ड्स द सर्विस, एंड आल्सो बीइंग अ वुमन आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट of in the policing system. Being a woman myself, I want to create a role impact in the system, in the policing service. पुलिस में एनकाउंटर शब्द आपने सुना होगा। जी मैम। किसी विशेष परिस्थितियों में एनकाउंटर किया जाता है, इसे आप कितना सही मानती हैं? क्या यह मानव अधिकार का हनन नहीं है? मैम, एनकाउंटर का प्रोविजन बनाया गया है कि कुछ ऐसे जो सीरियस क्रिमिनल्स है या सीरियस ऑफेंडर्स है, जो अगर पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करते हैं, या जिनके भाग जाने से क्राइम, जो हमारा सोसाइटी में क्राइम है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वैसे केसेस में टैकल करने के लिए एनकाउंटर का वो प्रोविजन बनाया गया है। कभी कभी इसका दुरुपयोग किया जाता है मतलब कंसील करके, और फिर किलिंग में इसका कभी कभी दुरुपयोग किया जाता है। बट ऐसे इसको क्राइम रेट्स को कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया है, टू ब्रिंग द क्राइम लेवल्स डाउन। बट समटाइम्स व्हेन इट इज कंसील्ड, इसको एक दूसरा फेज देकर जब इसे एनकाउंटर किया जाता है, एंड दैट केस इट कैन बी ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स। बट ऐसे इसको बनाया गया है समाज के हित के लिए ही। मैम, आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और सोशियोलॉजी आपने पढ़ा है, इन दोनों विषय ज्ञान का आप प्रशासन में कैसे प्रयोग करिएगा? मैम, मैंने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है, जो कि एक इंडस्ट्रियल बेस्ड साइंस है, पूरा इंडस्ट्री पर आधारित है। तो ये जो मेरी नॉलेज है, ये मुझे हेल्प करेगी टू इन ऑल द इक्विपमेंट्स एंड ऑल द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन बिहार। और हमें पता भी है कि बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल। और सोशियोलॉजी, मैम, सोशियोलॉजी समाज का एक दर्पण है। वो समाज, हमारा जो समाज है जिसमें हम रहते हैं, और कैसे समाज जो है वो हम पर असर डालता है, ये समझने में मुझे ज्यादा हेल्प करता है। समाज की विशेषताएं और समाज के अलग अलग जो पहलू है, जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, क्राइम रेट हो गया, तो दोनों ही जो सब्जेक्ट्स है वो अपने अपने फील्ड में इम्पोर्टेंट है सोसाइटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मैम, समाज और समुदाय में क्या अंतर है? मैम, सोसाइटी जो है, समाज यानी वो ह्यूमंस जो है, वो ह्यूमंस टुगेदर दे फॉर्म अ सोसाइटी। और ह्यूमंस के जो आपसी रिलेशनशिप होते हैं, इंटर रिलेशनशिप्स जो होते हैं,
दैट फॉर्म्स द सोसाइटी। समुदाय मतलब कम्युनिटी, जब एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल जब आपस में खुद को एक कॉमन आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं, तब वो एक समुदाय बनता है। और एक समुदाय के जो लोग होते हैं उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, कुछ कॉमन पहचान होते हैं, कुछ कॉमन चिन्ह होते हैं जिनको वो सब मानते हैं, तो वो समुदाय बनता है मैम। ओके, पी लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो महुआ का या सड़ा हुआ विषाक्त शराब पी लेते हैं और अपने जान को गंवा देते हैं। तो पॉइजनस एक ही जान कीमती है, Yes, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, यह नकारात्मक प्रभाव है? सरकार को इसमें कुछ ढील देनी चाहिए थी या गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए था? मैम लिकर बैन करना जो है वो ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सही है। हाँ, ये लोगों को फोर्स करता है ट्रैफिकिंग की तरफ, या फिर मतलब गलत तरीके से शराब को जो है दूसरे राज्यों से लाने की लोगों को पुश करता है। बट ऐसे इसमें छूट देना या फिर इसको पूरी तरीके से मतलब ढिलाई दे देना, हाँ, सजाओं को कम किया जा सकता है, जो कड़े पनिशमेंट है या ज्यादा फाइन है, वो सब चीजों को कम किया जा सकता है, ऑफेंडर्स को चेतावनियां दी जा सकती है। बट पूरी तरीके से शराबबंदी को छूट दे देना वो शायद उतना सही नहीं होगा। चलिए, एक अंतिम प्रश्न मेरी तरफ से। हम लोग एक महिला है, महिला होने के नाते जब हम ट्रैवल करते हैं या ऐसे भी कहीं रहते हैं तो अपने मोबाइल में हमें कौन से सेफ्टी ऐप रखने चाहिए? 1 या 2 ऐप का नाम बताइए। सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। एक तो मुझे आरपीएफ का नंबर बस एक मुझे याद है 118, जिसको डायल करने के लिए कहा जाता है इन केस अगर महिलाओं के साथ छेड़खानी ट्रेन वगैरह पे होती है तो आरपीएफ के जवान तुरंत आ जाते हैं। दूसरा मैम मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू मैम। इस इंटरव्यू की क्या खास बातें रही, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनंत सर चर्चा करेंगे। ओवर टू अनंत सर। जी सर। Very excellent candidate you are. You are a very powerful orator. You speak very well. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। You have excellent command over both English and Hindi. Your vocabulary is very rich. So on that front, you will get additional marks. That is for sure. Second thing is you are very confident. Right from the first question, we have noticed that you are very confident, and till the last question itself, till then, you remain confident. आपका tempo throughout about half an hour आपका चला है mock interview about it. Your confidence remained very good. So this is also an advantageous part. Your body language is good. Your facial expression is very good. थैंक यू सर। अच्छा रहता है facial expression. Board members would be happy interacting with you, talking to you. आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, आपसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, अलग अलग एरिया से सवाल पूछे गए हैं, एंड यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। दिस ऑल्सो इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपको इसके लिए भी एडिशनल नंबर्स मिलेंगे। एक सबसे हाईलाइट जो एस्पेक्ट रहा आपके मॉक इंटरव्यू का कि 1-2 ट्रैप आपके लिए बिछाया गया था, आप उस ट्रैप में नहीं फंसी। सबसे पहला जो अंतिम प्रश्न था, सेकंड लास्ट प्रश्न था अबाउट जो बिहार में बैन हुआ है लिकर। The honorable member tried to trap you as far as possible. 2 or 3 questions were asked, perhaps 4 questions were asked, but you alertly आप उससे बाहर आ गए. So that shows that you are a very alert candidate. यहाँ पे भी बहुत अच्छा आपका strong point है. Some of the areas जहाँ की आप थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा, एक फील्ड का अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो दूसरे फील्ड की आलोचना नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या चैलेंजेस आप देख रही हैं, तो वहां पर आपको माइल्ड पॉइंट्स देने हैं। आप जितना माइल्ड पॉइंट्स दीजिएगा उतना अच्छा होगा। अगर आप जो ऐसे पॉलिसीज के बारे में बात कीजिएगा जहां की सरकार का लिमिटेशंस दिख जाए, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपने बात की और उसमें आपने कहा कि कुछ कुछ चीज़ों में समस्याएं हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि दी moment you talk about the limitations of these policies, you may get trapped. इसीलिए ऐसे पॉलिसीज को चुनिए जो कि बहुत माइल्ड हो, मॉडरेट हो, इजीली आप निकल सकिए। सर जैसे कोई एग्जांपल? जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उसको बेहतर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, जो आम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो ये माइल्ड पॉइंट बोलकर आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में, कोई स्पेसिफिक समस्याएं के बारे में अगर आप इफ यू स्टार्ट टॉकिंग, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस टू गेट ट्रैप्ड इन दोज क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग तो आसानी से आपको निकाल दिए, लेकिन वहां पे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स माइट भी थोड़ा हार्श हो सकते हैं आपसे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अनदर पॉइंट इज कि सपोज मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो इट इज वेरी एडवाइसेबल टू विड्रॉ एट द वेरी आउटसेट।
ये ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय कि आप एंटर कर जाओ और उसके बाद जब थोड़ा सा आप बोल दो उसके बाद कहो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। इस तरह से जब आप बोलिएगा तो वो एक तरह से इंप्रेशन देता है कि आपको पहले से आंसर नहीं पता था लेकिन यू स्टार्टेड स्पीकिंग। और अगर मान लीजिए वो भी अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो फर्स्ट यू सीक परमिशन फॉर गेसिंग, उसके बाद ही आप आंसर को बोलना शुरू कीजिए। ठीक है। Then there was a point about your service preference. तो जो 3 तक आप सही बोले, 4th में यू सेड शायद, और जो 5th है उसमें बोले आई एम नॉट श्योर। तो जहां तक आप श्योर हैं उसी जगह तक आपको बोलना था, उसके बाद आप चुप हो जाते। सर जैसे जो योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओह अच्छा, यस सर, यस सर। नहीं थी तो आपने शायद बोला, वो बोलने की आपको जरूरत ही नहीं थी, आप वहां पे चुप हो जाते, साइलेंट हो जाते। ठीक है The point is कि you have to play with your strong points in the interview. You should never reveal your weak points in interview. Never ever. You have to hide your weak points. जब तक वो फोर्स नहीं करें तब तक जो है आपको नहीं जाना है उस डोमेन में। You have to play with your strong points as we have talked. Overall, बहुत शानदार आपकी पर्सनैलिटी है। You speak very well. Your confidence level is awesome. You will get high marks in the interview. थैंक यू। Over to Bhavna ma'am. Prerna Singh, जी मैम। you are a very potential candidate. You know, confidence is emanating from you. That is for sure. And that's a very good point of your personality. Other things, you should at least read about your graduation subject. यस मैम। थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अभी मैम एक्चुअली 69th का मेंस है परसों से ना, तो अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत वो हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड। फिर भी अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा उसको ब्रश अप कर लेना है, बेसिक चीजों को, बिकॉज क्वेश्चंस वर वेरी बेसिक। यस तो उतना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उतना बता दीजिए, ठीक है। अदर थिंग्स कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन इज गुड, योर आई कांटेक्ट इज गुड, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आपकी, कॉन्फिडेंस लेवल भी सही है। यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू दिस। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। ओवर टू मैम। प्रेरणा सिंह, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि सर ने कहा और मैम ने कहा, बस उन्हीं चीजों पर आपको ध्यान देना है और आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट है। जी मैम। हमें लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 69 की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ भी आप देखिए। जी मैम। प्रेशर होता है लेकिन थोड़ा सा ब्रशअप करना है। ओके जी मैम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हमारी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन, टीम आईएएस का ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे भी मॉक इंटरव्यू हो रहा है। तो अगर आपको इच्छा हो, खुशी हो, तो टीम आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पे आप प्लीज आइए, यहाँ भी आपका मॉक इंटरव्यू होगा। सर ये 6 जनवरी के बाद से होगा क्या? 6 जनवरी के बाद से? जी जी बिल्कुल होगा। आप हमारे फोन नंबर पे आप प्लीज एक बार इंक्वायर कर लीजिएगा। सर क्योंकि ये मैं सोच रही थी कि मेंस हो जाता तो उसके बाद मैं देती फिर। जी बिल्कुल। आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा इंटरव्यू है सर 12 जनवरी को। 12 को है, तो आप आफ्टर अपियरिंग इन मेंस आप जो है आप आइए, यहाँ पर मॉक इंटरव्यू होगा। लेकिन आप पहले फोन करके एक बार अपना स्लॉट को बुक कर लीजिएगा। जी सर। एंड आपका वार्म वेलकम टीम आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पे। जी सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जाम एज वेल एज द अपकमिंग इंटरव्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। आप एग्जिट कर सकती हैं। थैंक यू।